स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू in my episode of answer writing in 7 minutes। अभी तक हमने एक इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन डिस्कस किया है, कुछ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी डिस्कस्ड वाज ऑन गवर्नेंस पेपर 2। आज मैं वैसे ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, 2022 के मेंस एग्जामिनेशन में आया। लुक एट द साइज, आई मीन रियली लुक एट द साइज ऑफ द क्वेश्चन। देयर आर 2 क्वेश्चंस प्रेजेंट इन अ सिंगल क्वेश्चन। Both may not have direct connections, but yes, definitely related to the similar syndrome. Is inclusive growth possible under market economy? क्या market economy के अंदर inclusive growth possible है? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. 150 वर्ड में लिखना है एंड देयर आर 2 बिग टॉपिक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इफ यू रिमेंबर, जब मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं अपने हमारे बैचेस के अंदर, बताता हूं कि कैसे यूपीएससी हमेशा वही टॉपिक पूछता है जो आपकी प्रिसाइजली सिलेबस में मेंशन्ड है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज प्रिसाइजली मेंशन्ड इन योर पेपर 3, द वर्ड इज देयर एंड दे हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी इस क्वेश्चन को लिखा कैसा जाए। मैंने थोड़ा सा अप्रोच में चेंज किया है। नॉर्मली ये क्वेश्चन डिस्कस करके एक फैकल्टी चले जाता है और एक्सपेक्ट करते हैं हम स्टूडेंट से कि वो कंटेंट डाइजेस्ट हो जाए। मैं पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करता चले जाऊंगा और उसके बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली ये आंसर कैसे लिखना है समझ में आ जाएगा। तो पहला पार्ट पकड़ते हैं, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। अब जब whenever you're doing the answer writing practice, today's session should be taken as a thumb rule exercise। इसी तरीके से आप अपने आंसर्स को फोकस में रखोगे। हाँ, डेफिनेटली ये 7 मिनट से आज कम से कम 15 मिनट पे चले जाएगा, बट दिस सेशन विल हेल्प यू फ्यूचर में आपके आंसर 7 मिनट में आ जाए, मेरे आए नहीं आए। मैंने 2 चीजों को पहले यहां पे तोड़ा है। क्वेश्चन पूछ रहा था क्या इंक्लूसिव ग्रोथ संभव है इस सिस्टम के अंदर। मार्केट इकोनॉमी किसे बोली जाती है? अगर हम मार्केट इकोनॉमी को देखें तो मार्केट इकोनॉमी वो होती है वेयर द मार्केट इज सुप्रीम। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल यू लार्जली डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स। तो इसका मतलब एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के बेसिस पे इकोनॉमी चलती है। ना तो इसे आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है, ना आर्टिफिशियली रेगुलेट किया जाता है। रेदर देन इट ऑल वर्क्स ऑन द डिमांड सप्लाई मॉडल। It operates on the principles of affordability। मतलब कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, योर प्रॉफिट बिकम्स द एंड। आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप वो काम करते हो, बेनिफिट नहीं हो रहा है तो यू शट डाउन योर शॉप, यू क्लोज डाउन योर बिजनेस एंड कंपनी। So therefore, the market economy is where the surplus is the aim, the profit is the aim, and if you're not gaining the profit, you would largely shut down the system. Therefore, clearly showcases that market economy is not going to work with any feeling of empathy or sympathy or compassion. They are going to work on the principles of affordability, that if you can afford, you would largely become part of it. Similarly, inclusive growth क्या होता है? नचिकेत मोर कमिटी और वो सारी कमिटीज देखो जो आरबीआई ने बनाई है, आप देखते हो इंक्लूसिव ग्रोथ वो होता है विच कवर्स ऑल डायमेंशंस। जितना टाइप का एस्पेक्ट है सब कवर किया जाए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इंश्योरेंस एस्पेक्ट्स, मार्केट एजुकेशन, हेल्थ, every aspect and dimensions are covered. At the same time, it ensures that all the dimensions are covered of all the people, not selectively all dimensions of some people or some dimensions of our people. No, nothing like that. Inclusive growth is one where all the dimensions are covered and all the people are having an access, all the people are also covered. तो मैंने 2 चीज का मीनिंग पहले आपको बताया। अब इससे आगे जाएं, नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी इज नॉट सेम। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज अ मार्केट इकोनॉमी, इवन इन इंडिया देयर इज अ मार्केट इकोनॉमी, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, रशिया या फिर उगांडा में भी मार्केट इकोनॉमीज है, चाइना में भी सॉर्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमीज है। बट क्या सारी चीजें सेम है? नहीं। मार्केट इकोनॉमीज को भी बेसिकली 2 चीजों पे डिवाइड किया जा सकता है। वन मार्केट इकोनॉमी इज अनब्रिंडल्ड परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, अनरेगुलेटेड परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ओरिएंटेड। फॉर दैट मैटर अगर मेरा कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट ये देख रहा है तो मार्क्स ने कैपिटलिज्म को ही ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। अनब्रिंडल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट होता है, द फोकस हियर इज ओवर प्रॉफिट नहीं। जो लोग बोलते हैं ना सोशियोलॉजी सिर्फ सोसाइटी में काम आती है, दिस इज एन एग्जांपल। वहीं से मैंने दोनों पार्ट उठाए।
और किस तरीके से एक मार्केट इकोनॉमी होती है वेयर इट इज रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, वेयर द गोल इज टू टारगेट प्रॉफिट बट नॉट टू गो फॉर ओवर प्रॉफिट, एक्सप्लॉइटेटिव प्रॉफिटिंग नहीं होती है यहां पे। अब अगर ऐसी मार्केट इकोनॉमी है तो जाहिर सी बात है इंक्लूसिव ग्रोथ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, वेयर द ओनली मोटो हियर वुड बी नॉट टू कवर द डायमेंशंस एंड सर्विसेज, रादर देन दिस इकोनॉमी वुड ऑलवेज ऑपरेट ऑन द टेंडेंसीज ऑफ एक्सप्लॉइटेशंस। बट अगर ऐसी कैपेसिटीज है, इफ दिस इज द मार्केट सिनेरियो, देन डेफिनेटली इंक्लूसिव ग्रोथ इज पॉसिबल। तो हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, और इस मार्केट इकोनॉमी का मैनिफेस्टेशन हमें किस तरीके, दो तरीके के मार्केट्स में मिलता है। अब तीन सिनेरियो मैंने बनाया, लेट्स सी कि मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं यार, देखें तो सही। लेट्स टेक द फर्स्ट सिनेरियो। Suppose in country like India, only public organizations are present where the government regulates it, market principles पे नहीं चलती है economy. In such circumstances, what would happen? Neither you will able to cover all the dimensions, neither you would be in a capacity to largely cover all the people. So technically in contemporary times, if we largely go for only public scenarios where government regulates every aspect, then the inclusive growth certainly would not become possible, as the resources would not be available to the government to cover both the aspects which are important and crucial for economic growth. Therefore ये मॉडल तो डेफिनेटली इंक्लूजन विद एक्सक्लूजन लेके आएगा, मतलब सर्टन पीपल वुड बी इंक्लूडेड बाय गिविंग देम रिजर्वेशंस, बाय गिविंग देम सब्सिडीज, बट मेजॉरिटी वुड टेक्निकली रिमेन आउटसाइड। सिनेरियो 2 देखते हैं। ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर होता है तो, अगर ये मार्केट इकोनॉमी ये मार्केट नहीं है, ये स्टेट इकोनॉमी है, ये मार्केट इकोनॉमी है, जहां पे पहला सिनेरियो देख रहा है। इफ देयर आर ओनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट हैपेंस हियर, कवर्स the dimensions or the people, the dimensions which are profitable and the people who can pay. If such a market economy exists, what you often see is the private organizations would largely take only those calls, their calling would only be on those ventures which can give them profit, and at the same time they will only target those people who are having capacities to pay. इधर क्या होगा, exclusion of majority and inclusion of only few people who can largely afford the price. Therefore state में भी inclusive growth नहीं आ रहा है आज। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर से वेलफेयर में आ चुके हैं, प्योर इस मार्केट मॉडल पे भी नहीं आएगा। एक थर्ड सिनेरियो है जहां पे मार्केट इकोनॉमी ऐसी है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, सॉरी पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। अब इधर क्या होता है, ये पब्लिक प्राइवेट है तो सही, लेकिन इसके अंदर दोनों मार्केट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। दे ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स एंड दिस कॉम्पिटिशन इज एंश्योर्ड बाय द स्टेट। ये दोनों मार्केट के हिसाब से चलेंगे कंपटीशन पे, और ये रेगुलेशन जो है एक स्टेट लॉज बनाता है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। जैसे इंडिया में मोनोपोलाइजेशन एमटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रोहिबिशन एक्ट जो है, Competition Commission of India जो है, we see they would operate on market principles regulated by the government. In such scenario क्या होगा, certain people are there who would be covered by the market, certain people are there who would be covered by the state, but however the coverage to all is ensured. Further, take the example of Rajasthan, where the private health organizations are today, because of the government regulations, are forced to largely provide the services to the downtrodden and the needy people. It ensures affordability as well. Because of the competition, we often see that the affordability also becomes an important aspect. The telecom sector is a very good example where it has led to strong inclusions. It covers every dimensions. Be that any services, if they are less profitable, there is a possibility state would take care of it, and if there are better profitability opportunities, state would ensure the regulation that they do not go for over profiting. So, अगर हम तीनों सिनेरियो देखें और क्वेश्चन के पीछे फिर वापस जाऊं, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट सर्कमस्टेंस, अंडर मार्केट इकोनॉमी? मेरे हिसाब से द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस, दे हैव द गॉट डैम आंसर नाउ। यस, inclusive growth is possible today only in market based economies, neither absolutely public dominated, neither in a market economy which is not regulated. Both would hamper the inclusive growth. Only a market economy which is well regulated can largely ensure inclusion of all, and
restricting exclusions to the minimum possible people and dimensions. But क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा. Before getting further, UPSC का हमारा first grand batch, it's 1 year since the StudyIQ have completed. 20th was the 1 year where we completed this one strong, successful and fruitful year of interactions between the students, community aspirants, people at large and the teachers and the people here. 3 बैच स्टार्ट हो चुके हैं. द बैच क्लोजेस ऑन 30th. You have not missed anything. It's just the orientation session which is going on, where we largely first make you gel up with the syllabus. English, Hindi and English, all the 3 batches are available. The level of answer writings you would have seen here. This is how the StudyIQ can act. Give us an opportunity to mentor you, and I assure you, you'll not be dissatisfied. In order to take the maximum discount, you can use the code DIVLIFE as far as the GS batches are concerned. अब आगे बढ़े. क्वेश्चन लिखा मैंने वापस. इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल इन मार्केट इकोनॉमी? यस, प्रोवाइडेड द पीपल इन द मार्केट इकोनॉमी आर हैविंग राइट्स, अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स. द स्टेट रेगुलेट्स द इकोनॉमी वेल, and private organizations also operate with social responsibilities. If these are the characteristics of market economy, then inclusive growth would definitely be ensured. And if market economy exists without existence of these basic prerequisite or essentials, then in such circumstances, rather than bringing market economy bringing inclusive growth, at the best market economy results in कुछ का साथ एंड कुछ का विकास. ऐसे यूज करो चीजों को आंसर में टू गेट यू दैट मार्क्स विच वुड टेक यू टू ऑल इंडिया सर्विसेज यार. बट आंसर खत्म नहीं होता. अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये पूछ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंस क्या है. देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बोलते हैं, जहां पे एफिशिएंट यूज हो रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी रहे और साथ ही साथ में मार्केट प्रिंसिपल्स, डिमांड सप्लाई मॉडल पे चीजें चल रही है. वहां पे ग्रोथ होता है, पॉसिबिलिटी होती है प्रोग्रेस की. अब ये सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबल तब होती है जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करते हो. बिकॉज दिस इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी मेड पॉसिबल एटलीस्ट इन अ मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर without financial inclusions. Why? Directly financial inclusions contributions with respect to economic growth can be seen from the schemes such as Jan Dhan Yojana. ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं पेपर 3-2 में कि इसकी इंपॉर्टेंस यहां पे दिखाई देती है. जन धन योजना ने एक तरफ सब्सिडीज का बेटर टारगेट इंश्योर किया, तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर किया. दूसरी तरफ resource availability बढ़ा दी. When the accounts were opened, now the resources were present, people could largely have an access to various loans etc. और इनडायरेक्टली अगर हम देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेनिफिट, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स. फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑल्सो हेल्प्स देम टू लार्जली अवॉइड एनी सर्कमस्टेंशियल effects such as of disasters and others, as the financial inclusion provides them opportunities to get easy finances. 75% of the startups started by women in India are self-financed. Why? They don't have that resources, and that resources can largely be possible by financial inclusion. So therefore, if the goal of the Indian economy is to reach to that 5 trillion, then the financial inclusion is one primary requirement, as financial inclusion not only directly contributes to the economy, but it indirectly also ensures support to those people who actually has capacities, talent, but lacks financial resources. In such circumstances, when the financial inclusion is ensured, the insurance can be taken care of, the loan can be taken care of, the finances at the right time can be ensured, which will largely protect the people from falling into debt traps. And you know it well, as M.N. Swaminathan who headed the National Farmers Commission in 2007 clearly advocated that how the indebtedness among agriculture among the farmers have been one of the primary crises for agrarian unrest. अगर इनको इंक्लूड किया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स लिख सकते हो कि कैसे उन्होंने फार्मर्स की ड्रेजरीज को रिड्यूस किया, साथ ही साथ में हमारे फूड प्रोडक्शन को भी कंट्रीब्यूट किया. तो देयरफॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज सर्टेनली वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू एंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड दैट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मार्क कैन ओनली बी रीच्ड इफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इज टेकन केयर ऑफ. एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन काफी ऑब्वियसली एथिक्स में बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और लंबे चौड़े क्वेश्चन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ो तो एक छोटा सा फैक्टर, वाइटल फैक्टर इनफैक्ट मिस हो सकता है यहां से.
क्वेश्चन है 2022 का, दैट इज द लास्ट मेंस जो आपके पास अवेलेबल है डेटा जिसका। पेपर 4 क्वेश्चन को रीड करता हूं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से रखना समझ में। आई जस्ट कीप ऑन मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी हियर। अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, इसके अलावा एंड मॉरल क्वालिटीज, इन दोनों के अलावा एम्पैथी एंड कंपैशन, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज और मॉरल क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए, बट इनके साथ साथ एम्पैथी और कंपैशन आर सम ऑफ द वाइटल एट्रीब्यूट्स दैट फैसिलिटेट सिविल सर्वेंट, आप लोग फ्यूचर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स एंड बियॉन्ड दैट, आर वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट। मैं वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर रहा हूं। टू बी मोर कॉम्पिटेंट, ज्यादा कॉम्पिटेंट होने के लिए इन दोनों के अलावा ये दोनों चीजें भी चाहिए। कॉम्पिटेंट की चीज में ऑब्वियसली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और टेक क्रिटिकल डिसीजंस। तो कहना क्या चाह रहा है, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज प्लस कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज के साथ साथ एम्पैथी प्लस कंपैशन दोनों होने चाहिए in order to largely make bureaucrat serve with more efficient and serve in a more efficient and effective manner। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये दो तो होनी चाहिए, इनके साथ ये भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब पहले आपको ये क्लियरली बताना है कि ये दोनों क्यों चाहिए। डोंट अज्यूम कि ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है आंसर में। नो, यू वुड हैव टू एक्सप्लेन एवरी पार्ट। देयर इज अ पर्पस ऑफ एवरी पॉइंट, एवरी कॉमा, एवरी फुल स्टॉप इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ध्यान में रखना है कि 150 वर्ड में करें। पहले बताना इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर बताओ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग में या बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस में। चलो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बनाया कि बैकग्राउंड देखते हैं। एक आईएएस ऑफिसर का अगर एनवायरनमेंट देखें हम, द एनवायरनमेंट इन विच अ सिविल सर्वेंट वर्क्स और अ ब्यूरोक्रेट वर्क्स इज he faces different forms of challenges. Specific, the challenges of uncertainty. There are many uncertain things which can take place. Suddenly the law and order situation can largely change. Suddenly there are, certain rallies which can create conflicts. Disasters may come up. There are always operating in certain uncertain manner. The bureaucracy operation procedure is certain, but the circumstances remains uncertain. Coupled with this huge degree of uncertainty, we also see a bureaucrat operates in a condition jahan pe he has to follow the rigid hierarchy present in a bureaucratic system, where the stress is laid on procedures. One would have to go table to table, aspect to aspect, jahan pe ye red tapeism ka concept aata hai, aapko procedures follow karne ही पड़ेंगे। नहीं तो there is a possibility tomorrow an RTI can be filed on you and you can be branded as a corrupt officer. Coupled with this mismatch between resources. Resources are always scarce. Why? Because there is diversity of demands which one has to fulfill and the resources are not optimum. You would have to develop the intellectual competencies to use the less number of resources for the maximum benefits, maximum happiness of all the people. बट उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, नहीं तो कोई चैलेंज ही नहीं रहता दोस्त। रिसोर्सेज कम है और ये डाइवर्सिफाइड डिमांड को फुलफिल भी करना है, साथ ही साथ में इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए। बट द चैलेंजेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट ओनली दिस। कपल्ड विद दीज सर्कमस्टेंसेस यू ऑल्सो सी aim of civil services is what? Specially to provide that support structure for those people who are vulnerable. एक एक्सेसिव फोकस हमारा कहीं ना कहीं इनके प्रोटेक्शन की तरफ होता है, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटीज लो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रोटेक्शन एक्ट लो, और मे बी एनी अदर ट्रेड यूनियन और अदर एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज होती है। साथ ही साथ में इन ये भी अगर कम पड़ रहा था, यू ऑल्सो सी पॉलिटिकल प्रेशर्स, सीनियर प्रेशर्स, और लोगों की तरफ से यू आर लेबल्ड एज व्हाट? पांडु बोलते हैं ना। नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोचना, आप भी शायद वहीं जाना चाह रहे हो। मतलब एक तो सो मेनी चैलेंजेस आर देयर, साथ ही साथ में
there is specific aim which you are expected to fulfill, coupled with certain senior level pressures, could be from politics or administration. At the same time, you also face challenges from people who largely look towards you from a particular perspective, equating you to be a corrupt, equating you to be a babu. Babu is not a celebrated term. Babu is a derogatory term technically, indicating inefficiencies where the people are not ready to work. ये इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए आपको. शॉर्ट में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया बिकॉज माई एम इज टू नॉट मेक यू राइट आंसर. माई एम इज टू make myself irrelevant here. That after 20, 25, 30 or 3 months, a time should come where you should write in the comment box, say, sir, you're not required. We have developed those skills. That would technically be my achievement. तो first explain the scenario. क्यों करना है सर? सिनेरियो क्यों पूछा ही नहीं है इसमें? आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? कंपिटेंसीज होनी चाहिए. मैंने एक बार जब सिनेरियो एक्सप्लेन किया, अब आगे मैंने बताया टू टैकल दीज चैलेंजेस जो मेंशन किए हुए थे, स्पेसिफिकली ऑफ रिसोर्स स्कैर्सिटी, one would have to largely have intellectual competencies. One should know the various models of development. One should know the geographical aspects. One should be aware of the various rules and regulations. So those challenges would act as a starting point of your answer. And on the basis of those challenges, पहला पार्ट में टैकल करूंगा. Because of these challenges, intellectual competencies is required in order to manage the pressures of seniors. In order to manage the resources in the most effective manner, one would have to be intellectually competent. होना पड़ेगा. Coupled with this, the other challenges such as these, जो hierarchy थी, diversity थी, political nexus थे, इन सब के लिए आपको कहीं ना कहीं एम्पैथी और कंपैशन होना पड़ेगा. इमेजिन द फ्लॉलेस इंट्रोडक्शन विच वी हैव नाउ. पूरा क्वेश्चन आंसर्ड हो गया इधर, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बॉडी नहीं थी. क्या करना है? कुछ ऐसा होना चाहिए इंट्रोडक्शन. द कंडीशंस इन विच द प्रेजेंट डे ब्यूरोक्रेट्स वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग. ऑन वन हैंड, व्हेन देयर इज अ रिसोर्स स्कैर्सिटी, ऑन द अदर हैंड, the goal of the civil services comes in contradiction to the resource availability. Coupled with this, a civil servant is expected to manage the pressure of seniors, political representatives, and at the same time also reduce the image of babus in the eyes of people. In such a diversified, challenging scenario, the civil servant is bound to have that intellectual competency in order to survive and fulfill the roles. And in order to tackle the other challenges in contemporary time, empathy and compassion has become the vital aspects of a bureaucrat. Oh, what if? Personally बोल रहा हूं, किससे भी चेक करा लेना ये आंसर. इंट्रोडक्शन में मन मुग्ध हो जाएगा आपके आंसर में. ऐसे लिखे जाते हैं गाइस आंसर. ये घास काटने वाले काम बंद कर लो. आप पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखो, बैकग्राउंड में आना सीखो. ऐसे लिखते रहोगे ना 2 साल और यहीं पे मेरे से लेक्चर सुनते रहोगे. सॉरी टू से दैट, बट अनफॉर्चुनेट है ये. इससे आगे बढ़ते हैं. अब ये बोल रहा है एम्पैथी और कंपैशन नेसेसरी है. ऊपर हमने लिखा हाँ भाई नेसेसरी है, क्योंकि ये चैलेंज को टैकल करने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए. अब और नेसेसरी क्यों है? बिकॉज 150 वर्ड में और एक्सपैंड करना पड़ेगा. एम्पैथी होती क्या है? एम्पैथी रेफर्स टू, यू नो इट वेल, अंडरस्टैंडिंग समबडीज फीलिंग. यार तेरा दिल टूट गया यार, मैं समझ सकता हूं. कैसे समझ सकते हो? बिकॉज मे बी ही वुड हैव आल्सो गॉन थ्रू द सेम सर्कमस्टेंसेस. Or maybe he's having that capacity to put himself into your shoes. फिर सोशियोलॉजी वाले याद कर लेना, मैक्स वेबर यही बोलता है. Compassion is what? Understanding the other's suffering, but at the same time, you also have the aim and motivation to solve their suffering. You are willing to help them. You are actually willing to help these people there. So in short बोलूं तो empathy is equal to compassion minus action. Empathy में action नहीं होता है, compassion में आप action oriented होते हो चीजों में. तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी में एम्पैथी और कंपैशन एक्सप्लेन किया. आगे देखते हैं इनकी रिलेशनशिप क्या है. कुछ एग्जांपल जो करंट से हैं. बिफोर दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर फैबुलस बैच ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड द लव व्हिच यू हैव एक्चुअली शोन. इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश.
The batch have just started. We have started with the orientation sessions. If you have missed, get into the batch. It's time, guys. One more year. In fact, less than 1 year now to your next prelims. And a general studies course takes 8 to 9 months to get completed so that you develop that capacities. Join the batch and take your answer writing to that next level. And I still assure you, the level of answer writing which we are discussing here, if you find it anywhere else in this, world with respect to UPSC, call me. I'll pay your fees. Coming to the next, क्यों compassion और empathy important है? पहले क्या होता था? The goal of the state was law and order. The civil servants were largely called as माई-बाप्स. The awareness among the people was less. They were not demanding. इसीलिए क्या बोलते थे? माई-बाप सरकार. Second ERC क्या बोलता है? IAS officers considered them as modern day viceroys. So when the state was law and order, the goal was to have such values among civil servants. Neutrality होनी चाहिए because welfare policy पे focus नहीं करता था state. And therefore, empathy and compassion was not considered as the primary value of a bureaucrat. But in contemporary time, the circumstances have changed. Today, the state has become a welfare state. किस तरीके से ethics में paper 3, Weber, values का combination है. I mean, examiner एक आंसर पढ़ने ने तो नशा हो जाना चाहिए आपके पेपर का उसको. गोल भी स्टेट का आज क्या है इस वेलफेयर स्टेट के कारण? सबका साथ और सबका विकास. मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. एंड कपल्ड विद दिस, यू ऑल नो रिसोर्स स्कैर्सिटी है, और साथ ही साथ में the citizens today, like you and me, have become more aware because of the expansion of educations and because of our protections of right given by the Honorable Supreme Court, High Courts, and the Parliaments as well, by framing certain laws which protects our freedom and ensure social justice. तो आज के कंडीशन स्टेट के ये है. जब स्टेट लॉ एंड ऑर्डर में चलता था तो न्यूट्रलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और इन पे फोकस हुआ करता था. इम्पर्सनैलिटीज एंड अदर थिंग्स, एनोनिमिटी, कंपैशन, सिंपैथी वाज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर. यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये. देयरफॉर कंपैशन एंड एम्पैथी आर टुडे क्रूशियल. तो मैंने थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, लेकिन एक एग्जांपल देना इंपॉर्टेंट है. ये लेटेस्ट एग्जांपल अक्टूबर नवंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास का एग्जांपल होगा. ये एक पटना का इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक आईएएस ऑफिसर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, एक गर्ल स्टूडेंट ने बोला था कि कैसे सरकार को जो है सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने चाहिए. And this lady IAS officer behaved very rudely कि आज आप सैनिटरी पैड्स मांग रहे हो, कल आप कॉन्डम्स भी मांगोगे तो सरकार आपको कॉन्डम्स भी देगी. मतलब क्या? इसके अंदर न तो एम्पैथी थी न कंपैशन था. और हुआ क्या? इश्यू बैम्बू, it became a very complicated phenomena. And as a result, this particular IAS officer largely became victims of different forms of trolls. But what that IAS officer was lacking was empathy and compassion. Forget about compassion. She did not even had that empathy. और किस तरीके से मॉडर्न डे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती बिना एम्पैथी के. आप एकदम रिजिड प्रोसीजर से चलोगे, न्यूट्रलिटी, हायरार्की, लॉज, ऑर्डर. क्या हुआ? वो आईएएस ऑफिसर कोई गलत नहीं थी, लेकिन वो एम्पैथी कंपैशन नहीं होने के कारण में ये मॉडर्न डे चैलेंजेस नहीं टैकल कर पाओगे. तो मैंने एक एग्जांपल से भी मेरा केस स्टडी प्रूव कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है एम्पैथी और कंपैशन. बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक तरफा डिबेट है. अगर सिर्फ एम्पैथी हो तो क्या? दैट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू मेक मच सेंस. एट द बेस्ट इट वुड बी इक्वल टू पिटी है आपके ऊपर, बिकॉज योर गोल इज नॉट टू हेल्प इफ कंपैशन इज नॉट देयर. बट सपोज अगर सिर्फ कंपैशन हो, एम्पैथी नहीं हो तो क्या? दैट इक्वली इज डेंजरस. ये डायमेंशन लोग जो है अपने कंक्लूजन में लिखना भूल जाते हैं. So this dimension should be there in the part of your conclusion so that examiner knows how balanced you are. We have explained the importance of empathy and compassion with respect to contemporary problems or challenges faced by the modern day bureaucrats. But at the same time, many times compassion and empathy, if both are not coexisting together, mere empathy would not make any sense and it will not bring change. And compassion without empathy again is equally dangerous. As we often see, this is reflected in the example ambulance plantation.
ये क्या वर्ड है सर? ये सिंगल कॉमा में ऐसे वर्ड्स यूज किया करो। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब की एक रैली जा रही थी, अपोजिट पार्टी ही सही, लेकिन एग्जाम्पल यहां पे समझाने के लिए सफिशिएंट है। आईएमसी एक वीडियो के साथ आता है और बोलता है देखो ये एम्बुलेंस जस्ट प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी पास होने से 2 मिनट पहले गई। प्राइम मिनिस्टर साहब दिखाना क्या चाह रहे थे शायद इस आईएनसी के हिसाब से, वी विल नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स ऑफ दिस, कि भाई देखो मैंने एम्बुलेंस को पहले जाने दिया। हुआ क्या? कंपैशन था। द कंपैशन वाज लार्जली प्रेजेंट बट एम्पैथी वाज नॉट देयर, बिकॉज यहां पे दिखाई देता है सेल्फी सिंड्रोम। सेल्फी सिंड्रोम क्या है? व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प समबडी, कंपैशन इज देयर बट एम्पैथी इज नॉट देयर, because you are just helping for the sake of that selfie there. Therefore, both empathy and compassion has to be together. Existence of only one would only complicate the existing governance mechanisms. At the same time, care should be taken that empathy and compassion are required by the civil servants. But there is a possibility that this empathy and compassion can hinder the competencies. And in such circumstances, the civil servant, beside having the qualities of empathy and compassion, should also be emotionally intelligent. तो मैंने क्या किया? मेरे पेपर फॉर एथिक्स के एक दूसरे टॉपिक से कंक्लूड कर दिया। तो भैया कंपिटेंसी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, प्लस एम्पैथी भी होनी चाहिए, प्लस कॉम्पिटेंसी भी होने कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, और द सेम टाइम कंपैशन भी होना चाहिए। साथ ही साथ में भैया इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। सो आई हैव कंक्लूडेड वन कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ अ कॉन्सेप्ट बाय अनदर कॉन्सेप्ट। नाउ write this answer and show to any damn examiner who is connected with your civil services or maybe beyond that in your graduation or post graduation, and do leave me a feedback in the comment section. And guys, please, if you're really liking the video, do share it यार, do comment। एक आदमी यहाँ पे 15-20 मिनट एक क्लास लेता है और एक लाइक भी नहीं और एक कमेंट भी नहीं आता है, तो आई एम नॉट सेइंग मैं आई एम ऑपरेटिंग विद एनी individualistic will. It's just the sake that sometimes just like we motivate you, you people can also serve as a motivating force. So thank you so much. I hope you enjoyed this session and it did change you, as I promised yesterday, the mindset with respect to ethics. Take care. Have a nice day and join the batch. Use the code DEVLIVE to get the best possible discounts. Thank you. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।